Hello friends, good morning, good afternoon and good evening. Welcome to Synapse Academy. Aji OCS means General Studies paper 1 आज एग्जाम ହେଇଛି ତ ତାର ପେପର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ଯଦି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି you can go to OPC library telegram channel and you can get the question paper there telegram channel ର link description box ରେ ଦିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଦେଖି ପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜି ଦେଖିବା କି how the questions were there in the OCS means okay क्वेश्चन केमती थिला ओसीएस मेंस रे एंड आमे केमिति मेन एग्जाम को पर्टिकुलरली पेपर 1 को केमिति अप्रोच करबा जो माने नेक्स्ट ईयर ओपीएससी मेन एग्जाम दबा को जाउ छंती आई होप समस्त मेन एग्जाम नेक्स्ट टाइम देबे तो आमे केमिति अप्रोच करबा जेमति कि आमानकर मार्क भलो आसी परिबो ठीक अछि तो सेटा आमे देखिबा एंड क्वेश्चन किछि एनालिसिस हमें करबा किछि क्वेश्चन डिस्कशन भी करबा एंड देखिबा कि ओपीएस रे पैटर्न केमति रहउची आमे सेतर कोन लेसन नै परिबा सो दैट हमको नेक्स्ट एग्जाम रे हेल्पफुल होबो ठीक अछि सो किछि क्वेश्चन जोटा आपण मानकर थिबो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन आई विल ट्राई टू आंसर बट बिफोर दैट लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड we will proceed okay just a minute let me share the screen just a minute let me share the screen then we can proceed okay I hope you all can see the screen okay see this is the paper 1 and paper 1 ro ethara सबुठु बड़ लेसन कि there is a heavy emphasis on Odisha specific question. Heavy emphasis on Odisha specific question. Odisha specific. Okay. First thing. Second thing, paper was not so much difficult. Okay. Paper was moderate. Although Odisha specific question पचरा है paper moderate थिला and approach करी होबो आपण मानन पाखरे ओडिसा स्पेसिफिक किछि भी कंटेंट जदी अछि आपण माने आराम रे क्वेश्चन आंसर लिखि दे पारिबे किछि प्रॉब्लम होने आपण मानन को ठीक अछि जो जो टॉपिक रे क्वेश्चन आछि ऑल दोस टॉपिक्स आर कॉमन रिलेटेड टॉपिक्स कोनोसी एम्ति टॉपिक रे क्वेश्चन आछन जोटा कि आउट ऑफ बॉक्स ओके आउट ऑफ स्काई क्वेश्चन पड़ला कि ही जानना ओके सेमति क्वेश्चन नथिला तो मॉडरेट एबव मॉडरेट पेपर थिला and heavy emphasis on Odisha specific questions किछि लेंथी क्वेश्चन नाही आराम से करी होबो टाइम मैनेजमेंट जदी आराम रे करी परिबा आराम से आपण माने पेपर कंप्लीट कर दे परिबे ओके लेट अस गो टू द ब्रेकअप को सेक्शन नु केते क्वेश्चन आछि ठीक अछि लेट अस गो टू द ब्रेकअप को सेक्शन नु केते क्वेश्चन आछि देखिबा ऑल ऑफ यू कैन सी दिस ओके सी एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री वर्चुअली कोनोसी क्वेश्चन आसिनी कहले चले एक्सेप्ट गोटे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्वेश्चन जोटा कि हमें जबरदस्त आनिया भीतर भर्ती करछु बट एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री मु कहबी कोनोसी क्वेश्चन आसी नाही ओके मॉडर्न हिस्ट्री रू 20 मार्क्स मॉडर्न हिस्ट्री 20 मार्क्स गोटे क्वेश्चन ओके ओडिसा हिस्ट्री सिग्निफिकेंट क्वेश्चन 60 मार्क्स ओके हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम ओडिसा हिस्ट्री ओके ओडिसा आर्ट एंड कल्चर 30 मार्क्स Physical and India geography 50 marks Odisha geography 45 marks so you can see one lesson we can learn here ki geography is getting very high importance in the OCS paper 50 and 45 95 marks from geography okay आपण गोटे ट्रेंड देखिबे लास्ट वर्ष 2 वर्ष हलानी ज्योग्राफी ऊपर रिपीटेड एम्फासिस दोछ ओपीएससी ज्योग्राफी रो क्वेश्चन अधिक आछी इंडिया ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी ओडिसा ज्योग्राफी सबुत्र क्वेश्चन आछी सोसाइटी 30 मार्क्स क्वेश्चन ठीक अछि सो दीज आर द क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप ऑफ ओडिसा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जीएस पेपर 1 ओके अच्छा एबे हम देखिबा क्वेश्चन केमिति थिला एंड तापर हम डिस्कशन करबा किछि क्वेश्चन ठीक अछि the most important challenge in the exam to understand the question properly भलो से क्वेश्चन बुझिबाटा सब बड़ चैलेंज ओके ओडिया रे लिखा हिची इंग्लिश रे भी लिखा हिची तो भलो से क्वेश्चन पढिबाटा इंपोर्टेंट तेनु इन फर्स्ट क्वेश्चन इन द एज ऑफ क्लाइमेट चेंज
Global warming plays a critical role in the melting of snow ice cover. Discuss with suitable examples. This is directly taken from the syllabus. Directly syllabus to question पढ़छे. Test series रे भी question पढ़ितला. Okay, melting of ice caps, glacier. Okay. So this question can be approachable. Okay. Then critically analyze what are the examples of tangible and intangible cultural heritage. ठीक अछि. Okay. ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା କି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ତ ତ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆସ୍ଡ କି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଟାଞ୍ଜିବୁଲ ଆଉ ଇନଟାଞ୍ଜିବୁଲ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ଅଛି ତା ଉପରେ ଲେଖ। ଓକେ, ଦେନ୍ डायरेक्ट क्वेश्चन, भूमकर एंड सोमवंशी डायनेस्टी कंट्रीब्यूशन कौन थिला? पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन रे। नेक्स्ट सोशल एम्पावरमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन, ओडिशा गवर्नमेंट रो कोन रोल अछि, पॉलिसी अछि सोशल एम्पावरमेंट पई, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट पई ओडिशा गवर्नमेंट रो कोन कोन स्कीम्स अछि, लेखो डायरेक्ट क्वेश्चन। भक्ति मूवमेंट केमिति ट्रांसफॉर्म करिछि ओडिशा रे रिलीजियस प्रैक्टिस एंड सोशल रिलेशन, socio-religious impact of bhakti movement in medieval Odisha, known question, commonly asked question पढ़िछि। Briefly the role of archaeological survey of India, ASI केही भी एक्सपेक्ट करनथियो क्वेश्चन आसियो बोली, बट आसीछि, you can write something about ASI। ASI प्रोटेक्टेड साइट्स अछि। एबे आपण माने सब बेले न्यूज रे सुनुथिबे शिशुपालगढ़ जो ओडिसा रे अछि ता ऊपर ASI जो हाई कोर्ट रे केस चलथिला कि एनक्रोचमेंट ହେଇଛି शिशुपालगढ़ और एक्चुअल जो साइट रे ASI खोली की बाहर करथला। ओके, एंशिएंट जहां भी रिमेन्स अछि तो से साइट एनक्रोचमेंट ହେଇଛି, सेति पई ASI सबले न्यूज रे थाए, ठीक छै, तो सेति पई क्वेश्चन आसी। देन ज्योग्राफी क्वेश्चन, डिफरेंट फॉरेस्ट फाउंड इन ओडिशा एंड फॉरेस्ट रोल कोन अछि बायोडायवर्सिटी रे। ओके, देन नेचर ऑफ रीजनल डेवलपमेंट इन ओडिशा स्टेट, ए क्वेश्चन टा ए थीम टा ओपीएस रे गोटे फेवरेट थीम, सब बेले क्वेश्चन आछि काहे कि ना आपण मन जानिथिबे जे वेस्टर्न ओडिशा ईस्टर्न ओडिशा आ भितर सब बेले टसल रहउछि, डिस्पैरिटी रहउछि, कॉन्फ्लिक्ट रहउछि, ठीक अछि, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। देन गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ओडिशा डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। ओके, most of the questions have been asked in the test series also। और then festivals of Odisha directly लिखा है syllabus रे, and festival रो importance कोन अछि, माने how festival reflect the cultural pluralism and social harmony। ओडिसा रो festival cultural pluralism and social harmony को केमते प्रमोट करूछ, with examples you have to write। ओके, then स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होची 1936 रे हितला, 2036 रे हमें 100 वर्ष पालन करिबा। तो सब बेले न्यूज रे रहउछि कि 2036 सुधा हमें कोन करिबा, 2036 सुधा हमें कोन करिबा। तो से क्वेश्चन भी आसी कि 1936 रे कोन कोन मेजर फैक्टर थिला जो फैक्टर पई there was creation of separate province of Odisha। Okay, then 1817 in Odisha, already OPSC previous year रे क्वेश्चन भी आसी सारिछि, and again क्वेश्चन भी पढिछि पाई करि पेला। ओके, then group B 20 mark questions, ओडिया लिटरेचर सिलेबस रो अछि इवोल्यूशन, बट पचारिछि क्वेश्चन जे लिटरेचर रोल कोन शेपिंग कल्चरल आइडेंटिटी। वी विल डिस्कस द 20 मार्कर क्वेश्चंस, ऑल द 20 मार्कर क्वेश्चंस हमें डिस्कस करिया। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेटिक फैक्टर्स प्ले रोल इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म, माने क्लाइमेट रो जो डिटरमिनेंट्स अछंती, टेंपरेचर, विंड, प्रेसिपिटेशन, then water, okay, precipitation, temperature, wind, glaciation, तो एगुडा सब लैंडफॉर्म केमती डेवलपमेंट रे हेल्प करछंती, सेही जिंस हम लिखिया रछि। चारटा ही इंपोर्टेंट, टेंपरेचर लिखिबो, प्रेसिपिटेशन लिखिबो, विंड लिखिबो, ग्लेशिएशन लिखिबो। ओके, देन कास्ट ओपीएससी रो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन। ओके, कास्ट सब बेले क्वेश्चन आछि, इरेस्पेक्टिव ऑफ लास्ट 3 वर्ष रे आपण देखंतु कास्ट रो क्वेश्चन आछि। तो एथरो क्वेश्चन पचारछि, इंडियन कास्ट सिस्टम इज ए पैराडॉक्सिकल कांसेप्ट, काहे कि ना कास्ट सिस्टम रे बोथ स्टैटिसिटी अछि और फ्लूइडिटी अछि, ठीक अछि। स्टैटिक एंड फ्लूइड, स्टैटिक मींस जहा थिला सेया, फ्लूइड मींस मूविंग,
ठीक अछि ता माने कास्ट सिस्टम इज नीदर स्टैटिक नॉर फ्लूइड आमे अल्टरनेट वे कहि परिबा नीदर नॉर तो कहबनी आमे कहबा कास्ट सिस्टम इज बोथ स्टैटिक एंड फ्लूइड ओके both static and fluid. Tamane, what are the static features of the caste system and what are the fluid features of the caste system? आमको सेटा लिखिବାକୁ पड़िବ इंडियन कास्ट सिस्टम रे ए पैराडॉक्स केमती अछि एंड वी कैन एक्सप्लेन कि हाउ बोथ दिस कांसेप्ट्स स्टैटिक एंड फ्लूइड डिफाइन इंडियन कास्ट सिस्टम आ केमिति दीटा को साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करूछंती इंडियन कास्ट सिस्टम सेटा को हमको देखिबार अछि ओके देन क्वेश्चन नंबर 16 फाइनल फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट रे कौन कौन मेजर डेवलपमेंट हेतिला एंड सही डेवलपमेंट गुडा को आपण माने लिंक करिवे इंडिया रा पार्टीशन सहित एंड हाउ दिस डेवलपमेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 ओके देन लास्ट क्वेश्चन व्हाट आर द जियोमॉर्फिक हैजर्ड्स डिस्कस वेरियस मेजर्स टू मिटिगेट सच हैजर्ड्स कहीं की ना आपण माने देखुछन लैंडस्लाइड glacial lake outburst okay earthquakes so all these are getting repair land subsidence ए सब जिंस बारंबार होची जोशी मठ रे हितला उत्तराखंड रे जोशी मठ रे लैंड सब्सिडेंस हितला तो ए सब जिंस रिपीटेडली होची तो एगुडा होची जियोमॉर्फिक हैजर्ड्स तो ए जियोमॉर्फिक हैजर्ड रो एग्जांपल हम दबा एंड लिखिबा कि ए जियोमॉर्फिक हैजर्ड को मिटिगेट करिया पई कोन मेजर्स नबा पड़िबो so this was a Vishnu Mahathi Jai Jagannath so this was a complete overview of what were the questions asked in the GS1 paper so we will go ahead with the discussion of the 20 marker questions ठीक अछि so let us start discussing the 20 marker questions just a minute let me share the screen just a minute let me create the template and then we'll move ahead okay 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 I hope you all can see the screen okay we'll start question number 13 okay question number 13 says analyze the role of Odia literature in shaping regional cultural identity what are the keywords of the question role of Odia literature in shaping what regional cultural identity these are the keywords okay हमको रोल लिखिया पड़ियो रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी केमती ओडिया लिटरेचर इंश्योर करूची ओके ठीक अछि अच्छा इंट्रोडक्शन हमें कोन लिखि परबा हमें लिखि परबा कि ओडिया लिटरेचर ओके 8th century around 8th century okay we had something called as charyapadas okay okay तो सेठू आमे एबे इवोल्यूशन है कि पहुंचले डिजिटल एज रे ठीक अछि तो आ कुआ जाय कि ओडिया लिटरेचर इवोल्यूशन एउट स्टार्ट हला 8th सेंचुरी मिस्टिकल चार्यपदस ओके तो आमे पॉइंट डिजिटल एज पॉइंट आसलेनी तो दिस जर्नी हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन इंपोर्टेंट फेज डेवलपमेंट अच्छी ओडिया लिटरेचर रे सेटा को हम डिस्कस करबा फर्स्ट पेज हम देखिबा जेते बेले किछि नथिला जेते बेले देयर वाज संस्कृत डोमिनेशन सेते बेले जणे शूद्र मुनि करी जणे आसिले तांको जे सारला दास
ओके तो संस्कृत डोमिनेशन को काउंटर करिकी सारला दास लिखिले ओडिया महाभारत दैट वाज द फंडामेंटल और सेटा को हम कह जाए पिलर और बेस ऑफ ओडिया लिटरेचर ठीक अछि तो तो संस्कृत डोमिनेशन को काउंटर करिकी सारला दास लिखिले ओडिया महाभारत ओके मु पॉइंट्स कहूँ जो जो पॉइंट को यूज करके आपण माने आंसर लिखि पारिबे ठीक अछि ओडिया लिटरेचर रो मूलदुआ पकेले ठीक अछि सो ओडिया लिटरेचर जो महाभारत के लिखिले दैट सारला महाभारत आमे कहि परिबे कि दैट वाज द रेप्लिका ऑफ संस्कृत महाभारत नो सारला महाभारत जोटा लिखा हितला दैट वाज बेस्ड ऑन ओडिया ज्योग्राफी ओडिया कल्चर ओडिया फूड all these things were included in the Mahabharata of Sarala Das okay that reflected the Odia tradition and this phase is Sarala Mahabharata जो phase था that was the first step towards self assertion of Odia literature Odia identity in terms of literature हमरो self assertion एउठु ही start हला तो हमें ताऊ सारला दास को हमें कहि परिबा पायोनियर ऑफ ओडिया लिटरेचर सेते बेले संस्कृत डोमिनेशन अगेंस्ट रे से लड़ी ओडिया लिटरेचर को आरंभ करथिले ठीक अछि अच्छा तो सेकंड फेज दिस वाज द फेज ऑफ सारला दास सेकंड सो दिस वाज हमें कहि परिबा कि ए फेज रे गोटे ओडिया कल्चरल आइडेंटिटी रो मूलदुआ पड़ला ओके देन आसीबा द एज ऑफ पंचसखास okay and age of panchasakha this was the age of spiritual identity you know the name of panchasakhas okay the panchasakha manankar काम कोन this was in the 16th century okay the 16th century जो पंचसखा आसिले से माने कोन कले ओडिया लिटरेचर रे जगन्नाथ दास लिखिले भागवत ओके तो से भागवत गोटे गोटे भागवत होची ओडिया आइडेंटिटी रो गोटे माने हम कहबा जे ज्वलंतमय तारका ओके तो ओडिया आइडेंटिटी भागवत एते इन्फ्लुएंस कला ओडिया आइडेंटिटी को जे घरे घरे गारे घरे घर तो नु गां गारे हमें कोन एस्टैब्लिश कले भागवत टुंगी भागवत ओडिया आइडेंटिटी को एते इन्फ्लुएंस कला जे भागवत रो इन्फ्लुएंस रे हम भागवत टुंगी सब एस्टैब्लिश कले जो माने आपण माने निजो गां रे भी देखिथिबे जे भागवत टुंगी सब अछि ठीक अछि तो से भागवत टुंगी रे होउथला कोन दैट वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग सेंटर ऑफ रिलीजियस डिस्कोर्स ओके एंड सेंटर ऑफ मोरल एजुकेशन भागवत टुंगी को खाली भागवत पढ़ा होतला भागवत टुंगी रे लर्निंग भी होतला रिलीजियस डिस्कोर्स भी होतला मोरल एजुकेशन भी दिया होतला ओके ठीक अछि अच्छा आंको परे हमें पळा आसीबा मॉडर्न को स्विच कर जिबा ठीक अछि जेते बेले ओडिया लैंग्वेज क्राइसिस को आसिला बंगाली लोक माने कहिले जे ओडिया लैंग्वेज ता सेपरेट लैंग्वेज नुहो एटा होची बंगला लैंग्वेज रो गोटे पार्ट तो ओडिया लैंग्वेज जते क्राइसिस पळे आसिला माने आइडेंटिटी क्राइसिस आसिला आइडेंटिटी क्राइसिस आसिला सेते बेले आगु को आस्थिले ए क्राइसिस को ए जो बेंगली डोमिनेशन को रेजिस्ट करी ओडिया लिटरेचर रे आसिले फकीर मोहन सेनापति एंड राधानाथ राय ओके तो से माने एस्टैब्लिश करले रेजिस्टेंस लिटरेचर माने फकीर मोहन सेनापति फेमस 6 मान 8 गुंठ ओके 6 मान 8 गुंठ से देखिले कोन से क्रिटिसाइज करले जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थिला ता एगेंस्ट रे एटा गोटे रेजिस्टेंस थिला से कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करी कि लिखिले ठीक अछि आ सेतर देखिले कि इंग्रेज माने द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हाउ दे आर एक्सप्लॉइटिंग
the peasantry, the farmers. ठीक अच्छे एंड से सही स्टोरी माध्यम रे 6-8 जो उपन्यास से लिखिथिले ता थ्रू रे से देखै देले जे ओडिया लिटरेचर रो गोटे सेपरेट आइडेंटिटी अछि. दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ बेंगोली लिटरेचर. ओके एंड एई जो मूवमेंट ओके अल्टीमेटली कल्मिनेट हला 1936 रे ओडिशा गोटे नुवा प्रोविंस हला. ए सबुर पार्ट रही ओडिशा सेपरेट प्रोविंस बारे. ठीक अच्छे देन राधानाथ राय कौन कले. राधानाथ राय ओडिशा जो लैंडस्केप अच्छी ओडिशा जो ज्योग्राफी अच्छी ओके चिलिका ऊपर जो लिखिले कविता. ठीक अच्छे तो से चिलिकार सौंदर्य देखिकी से एते विभोर हो गले से जहाँ लिखिले समस्त मुहर सेटा अच्छी. ओके ओडिशार लैंडस्केप ओडिशार ज्योग्राफी ओडिशार गोटे आइडेंटिटी क्रिएट कले जे ओडिशा बहुत सुंदर एंड ओडिशार जो लोकल ज्योग्राफी अच्छी एटा बहुत सैक्रेड. ओके तांगर से कौन लिखिले चिलिका. ठीक अच्छे तो दैट प्रमोटेड द लोकल geography and gave a sacred outlook to Odisha's natural landscape. तो सेटा ही गोटे सेव कला तांगर गोटे आइडेंटिटी सेव कला ओडिसा कि ओडिशा एते माने से एटा कोन माने एटा होची जे समस्त को जणेबा जे ओडिशा कोनोसी गुण रे कम नुह. ओडिशा रे सौंदर्य भरी ही अछि. निज ऊपर प्राइड निज निज कल्चर निजर ज्योग्राफी निजर लैंडस्केप ऊपर निजे गर्व अनुभव करिवा. ठीक अछि अच्छा तो एमानक परे जते बेले सपोज हम पळे आसा नेक्स्ट फेज पोस्ट इंडिपेंडेंस को. ओके पोस्ट इंडिपेंडेंस को पळे आसीबा. ओके पोस्ट इंडिपेंडेंस रे टिके प्रोग्रेसिव आउटलुक आसिला ओडिया लिटरेचर रे. प्रोग्रेसिव आउटलुक आसिला. ओके सबुज जुग आमे जोटा कहूचे सबुज जुग आसिला तो सेते बेले बहुत भलो भलो राइटर माने जो मन अछंती से माने आगु को आसिले लाइक गोपीनाथ महांती. ओके गोपीनाथ महांती जे कि प्रथम ओडिया जे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले. ओके तो सीए तांकर बहुत भलो भलो उपन्यास अछि. ओके माटी मोटाळ ओके दाना पानी. ओके तो सी कौन कले सी गोपीनाथ महांती वाज सिविल सर्वेंट सी चाकरी करथले कंध परजा परजा तांकर उपन्यास गोटे अछि. तो या ऊपर गोपीनाथ महांती लिखिले सेमानकर लाइफ कोन सेमानकर जीवन केमती सेमाने केमती रहउचंती. तो आगु लोक माने ट्राइबल मानक विषय की जान नथिले. तो ट्राइबल मानकर लाइफस्टाइल को ट्राइबल मानकर वे ऑफ लिविंग को मेन स्ट्रीम को आनले गोपीनाथ महांती. ओके तो से कौन कले गोपीनाथ महांती थ्रू हिज राइटिंग saved the tribal identity and brought it to the mainstream. ठीक अछि okay and these are few important phases through which many stalwarts of literature have shaped the cultural identity of the state, regional and cultural identity of the state. Okay, so this will the answer to the question number 13. Okay, ठीक अछि okay next is question number 14. Question number 14 says explain of how various landforms let me go to the question. Question number 14 says explain how climatic factors play important role for the development of various landforms. हम जो डिस्कशन कले कि क्लाइमेट फैक्टर केमती लैंडफॉर्म को अफेक्ट करूची. ठीक अछि let us discuss that question how the climate factor affect the landform. ठीक अछि अच्छा फर्स्ट मु कहली चारिटा इंपोर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर हम एथे डिस्कशन करि परिबा. क्वेश्चन नंबर 14 ओके क्लाइमेट
factors landforms ठीक अछि ଆମେ फास्ट देखिबा जे टेम्परेचर हाउ टेम्परेचर इज अफेक्टिंग ओके टेम्परेचर see temperature affect the landforms or cause development of landforms in two ways okay development of landforms in two ways केमती first suppose मु कहली कि physical weathering okay physical weathering and thermal expansion okay physical weathering माने suppose cold climate ठीक अछि कोल्ड क्लाइमेट रे कोन हबो जो रॉक रहिले रॉक रो जो फ्रैक्चर माने रॉक भीतर छोट 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 फाट थिबो से फाट भीतर पानी पस जिवो ठीक अछि पानी पसले कोन हबो आमे देखिले कि सपोज पानी पसी कि ता भीतर जदी माने फ्रीज हे गेला कोन हबो तार वॉल्यूम टा बढ़ी जिवो वॉल्यूम बढ़ले कोन से फटे दबो रॉक ठीक अछि तो रॉक भांगिला तो दैट इज फिजिकल वेदरिंग अच्छा थर्मल एक्सपेंशन माने सपोज आमे एटा कोल्ड क्लाइमेट रे गोटे एग्जांपल देले ये कोल्ड क्लाइमेट रे रॉक भीतर जो फ्रैक्चर्स अछि छोट छोट फ्रैक्चर्स ता भीतर पानी पसिले ठंडा ही गले वॉल्यूम बढ़ी गला आइस रो ताको फटे देला थर्मल एक्सपेंशन हॉट डेजर्ट रे आमे जानि छी कोन दिन रे टेम्परेचर बहुत अधिक रात रे टेम्परेचर बहुत कम तो डायरोनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होउछ दिन राती हमति होउछ एटा होउछ दिन डे टाइम दिस इज नाइट टाइम तो जो टेम्परेचर बढ़ुची कमुची ओके ता फल रे गोटे रॉक रो सरफेस लेयर कहूँ ये बढ़ुची कमुची तो सरफेस लेयर कहूँ बाहरी पड़े जाउछ ओके ताको जाय एक्सफोलिएशन ठीक अछि ताको जाय एक्सफोलिएशन तो ता रॉक भांगिला ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट हमें देखिबा आउ कोन फैक्टर प्रेसिपिटेशन माने रेनफॉल प्रेसिपिटेशन ओके प्रेसिपिटेशन ठीक अछि precipitation and humidity also works okay humidity देखो जोठी हाई ह्यूमिडिटी अछि ओके सेठी कोन हुए हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर देखो हाई ह्यूमिडिटी जो मान ज्योग्राफी पढिछ बुझी परिबो पढिनो आफ्टर गोइंग थ्रू विदरिंग इरोशन प्रोसेस चैप्टर एनसीईआरटी रे पढले बुझी परिबो हाई ह्यूमिडिटी प्लस precipitation or high humidity plus temperature okay this will cause enhancement of chemical reaction बढ़ेबो ओके ता माने केमिकल विदरिंग प्रोसेस टाको बढ़ेबो तो केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक हबो ओके केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ओके ठीक अछि अच्छा जोठी सपोज गोटे टर्म अछि कास्ट टोपोग्राफी what do you mean by कास्ट टोपोग्राफी कास्ट टोपोग्राफी माने होछि लाइमस्टोन ओके लाइमस्टोन जो एरिया अछि अधिका सेठी जदी अधिका प्रेसिपिटेशन माने रेनफॉल ओके प्रेसिपिटेशन हला प्लस लाइमस्टोन सहित मिसले कोन हबो लाइमस्टोन में CO2 अछि ओके तो CO2 सहित मिसी की कोन हबो से रॉक को डिसॉल्व कर दबो ओके डिसॉल्व कर दबो ओके डिसॉल्व कर देले तो माने पडिथिबो देयर इज बहुत गुडा लैंडफॉर्म फॉर्मेशन हो ताको जे स्टालाक्टाइट स्टालाग्माइट सो दीज आर कास्ट टोपोग्राफी ठीक अछि अच्छा थर्ड हम देखिबा विंड प्रोसेस ता केमती रॉक फॉर्मेशन करूची ठीक अछि सिंपल जिंस विंड कोन करे गोटे छोटो छोटो रॉक पार्टिकल को नहीं गोटे जगह नहीं गोटे जगह डिपोजिट करे ओके ता माने विंड इज एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन ठीक अछि विंड
फोर आम देखा जे ग्लासीएशन ग्लासीएशन माने स्नो आइस ग्लासीएशन में कौन लैंड केमती लैंडफॉर्म इवोल्यूशन होची फास्ट जिनस होची माने कर गोटे माउंटेन अछि माउंटेन ऊपर कौन होची पूरा स्नो कभर ହେଇକି ଅଛି ମନେକର ସେ ସ୍ନୋଟା ଖସିଲା ସେ ସ୍ନୋଟା ତ କେବଳ ନିଜେ ଖସିବନି ତା ତଳେ ଯୋଉ ରକ୍ ଥିବ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବ so that is called as glacial erosion okay ସେ erosion ହବ ସିଏ ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ deposition କରିବ that is called as glacial deposition ठीक अछि अच्छा एटा होची माउंटेन रे सपोज गोटे रिवर अछि रिवर रे ग्लास माने आइस भर्ती ହେଇକି ଅଛି तो एमाने मूव करथिबे पानी सते मूव करथिबे ग्लासियर गुडाक आइस गुडाक तो से माने डिफरेंट लैंडफॉर्म फॉर्मेशन करंती जोटो आमे कहबा यू शेपेड वैलीज ओके सिर्क so these are few examples of glacial landforms अच्छा आउ जिनस भी कहि परिबा सपोज एटा होची लैंड घर हमर होची ठीक अछि एटा होची सी एटा होची लैंड एटा होची सी एटा कोन एरिया एटा होची कोस्टल एरिया दिस इज द कोस्टल एरिया रे भी माने एजेंट होची एठी के टाइड और वेव जो हमर टाइडल वेव आछी तो टाइडल वेव भी लैंडफॉर्म फॉर्मेशन करूची ठीक अछि टाइडल वेव के कोन लैंडफॉर्म फॉर्मेशन करूची लगून्स ओके लगून ओके बीच फॉर्मेशन होची लगून फॉर्मेशन होची so these are the agents of climate which result in formation of landforms कौन नाम पढ़िले टाइडल वेव पढ़िले ग्लासिएशन पढ़िले विंड पढ़िले precipitation and humidity पढ़िले and temperature पढ़िले you need to remember these 5 points to write the answer okay exam रे हमको पॉइंट ही मन रखिया पड़िबो अंडरस्टैंडिंग आ किछि नहीं एतिक मन रखले हम आंसर आराम लिख दे परिबा कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन क्लाइमेट फैक्टर अछि आउ क्लाइमेट फैक्टर ने केम लैंडफॉर्म फॉर्मेशन करछ दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 15 caste system बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन पचराई छी caste system is characterized by both staticity and fluidity what do you mean by staticity and what do you mean by fluidity staticity मु कहली कि कास्ट सिस्टम टा जहा थिला से रहिछि फ्लूइडिटी माने होछि चेंज भी होछि आपको हमें केमेदी एक्सप्लेन करिया लेट अस डिस्कस ओके ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 15 caste system in India caste system in India okay how it is static and how it is fluid okay फर्स्ट थिंग स्टैटिक केमती कास्ट केबे भी चेमती भी चेंज होनी हमें केम कोन देखि जानि पर जे कास्ट चेंज होनी सेम जहातला से आज फर्स्ट होची व्हाट डू मीन बाय एंडोगैमी 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 मींस मैरिज विद इन सेम कास्ट कास्ट बाहर मैरिज ही परिबो नाही एबे भी ए सिस्टम टा बहुत जगह रे प्रिवेलेंट अछि अर्बानाइजेशन हो एजुकेशन हो रिच माने इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ हो लोक जेते ऊपर गले भी इंटर कास्ट मैरिज टा गोटे टाबू हिसाब रे देखा होछि सोसाइटी रे तो एंडोगैमी इज स्टिल प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी तो एंडोगैमी मींस मैरिंग विद इन वन्स ओन कास्ट मैरिंग विद इन वन्स ओन कास्ट ता माने एंडोगैमी अच्छी कास्ट सिस्टम भी अच्छी सेकेंड कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ भाई जी जोटी जन्म ता कास्ट सेटा हेगला
Okay, lifetime seta change hobo nahi. Okay, the caste identity is created at the time of birth, and that is not going to change. Even economically advanced heigale bi se caste identity ta change ho nahi. Okay, that is also feature showing ki caste system is rigid. Staticity means rigid. 3. Okay, then आम कहवा कि डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन जोटा कि फ्यू रिमोट रूरल प्लेस रे भी देखा जाउची कौन से फेनोमेनन रिमोट प्लेसेस डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इन टर्म्स ऑफ सपोज शेयरिंग वाटर रिसोर्स एबे भी आपण मन देखिबे जे कॉमन वाटर रिसोर्स शेयर करी होनी कैश मान सहित लोक माने करि पारु नांती करा जाय पारुनी ओके डिफरेंट जणे अपर कास्ट गोटे जगह से मानकर सेपरेट आ जणे सेपरेट कॉमन गैदरिंग रे से माने आसी पारु नांती दे आर नॉट कमिंग टुगेदर इन गैदरिंग्स ओके रिलीजियस प्लेस रे भी यूनिटी हेई पारुनी दे आर नॉट कमिंग टुगेदर एट रिलीजियस प्लेसेस आल्सो ठीक अछि सो दैट आल्सो discrimination is there that these phenomena show that the caste system is still rigid अच्छा ता माने कोन कास्ट चेंज होनी सेम रिजिड जहातला से अछि नो फ्लूइड भी होची हाउ फ्लूइडिटी ऑफ द कास्ट इज परसीव्ड फ्लूइडिटी केमती फ्लूइड होची एग्जांपल हम दबा फ्लूइडिटी केमती होची फर्स्ट जो माने सोशियोलॉजी पढुछ से माने जानिथिबो अदरवाइज जो माने सोसाइटी पढुछ से माने जानिथिबो sanskritization you all know sanskritization the concept was given by M.N. Srinivas okay sanskritization means lower caste upper caste तो आमे कहले कि कास्ट आइडेंटिटी इज ascribed at the time of birth तो से माने आइडेंटिटी आ चेंज हे परिबन किंतु से माने कोन करंती अपर कास्ट सहित मैच करिया पई they adopt the customs rituals lifestyles of upper caste कि आमे ए जिंस गुडा अडॉप्ट कले सेमानकर कस्टम सेमानकर रिचुअल सेमानकर लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कले कोन होबो आमे से लेवल को जाई परिबो ओके so that they can claim a higher status okay they can claim a higher status ठीक अछि that is called as sanskritization then आउ गोटे जिंस जोटा कि कास्ट आइडेंटिटी को फ्लूइड कर दोची that is the spread of education plus urbanization or urban employment so these are also giving fluidity to the caste okay then third caste related to political identity okay political identity तो हेले कोन हबो political identity सहित लिंक हेले जदि कास्ट political identity माने वोट बैंक हिसाब रे काम करिवो ताहले एमथि ही पारे कि दे विल डिमांड ड्यू राइट्स ठीक अछि मोबिलाइजेशन हो से मानकर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन may ultimately lead to economic upliftment and social upliftment okay so ame koi pariba ki these are the three things which through which we can say that caste still static completely static no caste of fluidity nature भी exist करूची ठीक अछि तो कंक्लूजन कोन कोन हम लिखि परिबा कंक्लूजन हम लिखि परिबा caste has been rigid has been static but in 21st century although the caste is static in form but it is fluid in action form रे caste is static
बट एक्शन कला बेलू क्लासटा फ्लुइडिटी डेवलप करूची कहीं एजुकेशन स्प्रेड होची पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होची संस्कृताइजेशन ऑपरेट करूची ऑल दिस थिंग्स आर देयर ओके ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन assess the major developments in the final phase of national movement and explain why independence became unavoidable by 1947 okay there are last phase of माने हमर जेतले इंडिपेंडेंस थेला तेरे बहुत ही इंपोर्टेंट इवेंट्स हेची जो इवेंट्स रा कल्मिनेशन बा जो इवेंट एंड हेची पार्टीशन रे ठीक अछि तो कौन कौन डेवलपमेंट हेची फाइनल फेज रे ओके developments in final phase 16 final phase रे कौन डेवलपमेंट हेची ओके फर्स्ट थिंग आमे देखिया ईयर वाइज डिस्क्राइब करबा 1942 रे कौन हला QIM क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रे क्विट इंडिया मूवमेंट हला अगस्त रिवोल्यूशन हला सेठी कौन हला कहले हम ना आमे डू और डाई करबा आउ से हबनी हमको डू और डाई करिया पड़ो ठीक अछि अच्छा तो डू और डाई स्लोगन दियाला तापरे 1945 रे कौन हला डू और डाई दियाला पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कराला ठीक अछि 1945 रे कौन हला राइज ऑफ आईएनए ओके सुभाष बोस आसले सीन को सेतबेले कौन हला आईएनए ट्रायल हला ट्रायल ऑफ आईएनए ऑफिसर्स रेड फोर्ट रे ट्रायल हला ओके एंड से इवेंट परे कौन हला नेशनल यूनिटी आसिला ठीक अछि अच्छा तापरे 1946 आरआईएन म्यूटिनी तुम जानि छो एचएमएस तलवार रो जो मान थिले सोल्जर्स दे रिवोल्टेड ओके तो से जो रिवोल्ट कले ब्रिटिश माने कोन रियलाइज कले ब्रिटिश रियलाइज्ड कि आम सेना भी आम कंट्रोल लाउ नाहंती ओके इवन द इंडियन सोल्जर्स जो माने ब्रिटिश रे काम को ब्रिटिश आर्मी रे काम करछन दे आर आल्सो नॉट लॉयल टू द क्राउन ओके तो ब्रिटिश मानकर सेडा रियलाइज हला अच्छा नेक्स्ट few constitutional developments around that period 1946 रे कोन हला ता पूर्व कोन हितला सिमला कॉन्फ्रेंस 1946 रे हला वावेल प्लान ओके सॉरी वावेल प्लान सिमला कॉन्फ्रेंस देन 1946 हला कैबिनेट मिशन ठीक अछि सो ए जो डेवलपमेंट हला in terms of constitutional development ठीक अछि these also paved the way for partition ठीक अछि these also paved the way for partition okay तो काहे ना वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हला सब थरे तो सक्सेसफुल हला नहीं सिमला कॉन्फ्रेंस सक्सेस हला ओके ओके ठीक अछि तो ए सब जिंस हला परे ब्रिटिश रियलाइज कले कि आमे आउ इंडिया को निज कंट्रोल रखि परिबु नै तो कोन पई ब्रिटिश भाबिले जे आमे इंडिया को निज कंट्रोल रखि परिबुनी फर्स्ट थिंग होची तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो थिला एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल that declined or that got diluted okay dilute hegala administrative control ta okay then military confrontation hela military confrontation माने जोटा कि हमरो आईएनए ट्रायल हला आरआईएन म्यूटिनी हला ओके से माने देखले विदाउट मिलिटरी से माने देखले आमे हमर किछि वैल्यू नै इंडिया रे यदि मिलिटरी हम संगे न रहिबे हमर स्ट्रेंथ तो होछि मिलिटरी ओके तापरे ग्लोबल जियो पॉलिटिकल फेल्योर और बैकलैश भी कोइ परिबा हमें बैकलैश ग्लोबल जियो पॉलिटिकल फेल्योर और बैकलैश सेतरे कोन हला वर्ल्ड वॉर 2 पर ब्रिटेन रो जो सुप्रीमासी थिला वर्ल्ड पावर हिसाब रे हमें ओटे पूरा माने नेतृस्थानीय लोक सेटा कमी गला काहे कि ना
यूनाइटेड स्टेट सोवियत यूनियन एमाने ब्रिटेन ऊपर प्रेशर पकेले भाई तमे आउ से भलिया पावर नुह वर्ल्ड वार 2 पर ओके एंड तापरे क्लेमेंट अटली को लीडरशिप रे जो गवर्नमेंट आसला लेबर गवर्नमेंट क्लेमेंट अटली को लीडरशिप रे जो लेबर गवर्नमेंट आसिला से तांकर देश रे एमती प्रॉब्लम हे गला डोमेस्टिक इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम आसिला से देखले जे आमे जल्दी इंडिया रो बाहरिया आम देश रे निज अवस्था खराब हे राणी इंडिया रही कोन करिया ठीक अछि तो से माने कोन कले कहले कि आमे छाड़ दवा इंडिया ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट सिविल वार सिचुएशन क्रिएट हला कोथि भाई डायरेक्ट एक्शन रे सिविल वार सिचुएशन क्रिएट हला पाखा पाखी 1946 रे इतला डायरेक्ट एक्शन डे तो सेते बेले कोन हला दैट वाज वेरी इनफेमस फॉर कम्युनल राइट्स हला तो ब्रिटिश वाले देखिले कि आमे जदी एठी इंडिया को न छाड़ीबा ताहले वी विल बी रेस्पोंसिबल फॉर दिस ओके तो सिविल वार पई आमे ही रेस्पोंसिबल होबा तो से माने छाड़िया पई निष्पत्ति नेले ओके so these are the factors that forced British for partition and these are the events that led to partition question is over chalo next question what are the geomorphic hazards discuss various measures to mitigate such hazards chalo discussion kariya geomorphic hazards ठीक अछि 17 geomorphic means what geomorphic means जोड़ा सब लैंड रो आछि ओके मु लिखि लैंडस्लाइड्स geomorphic hazard ओके डेब्रिस फ्लो केम दिवे मन कर हम कहले कि गोटे पहाड़ ऊपर बरफ पड़ची एंड बरफ कोन कला निज ओजन संभाल न पारे खसी गला ता सहित कोन करियो से माटी पत्थर सब नै कि आसीबो सेटा कहजे डेब्रिस फ्लो ता सहित ठीक अछि लैंडस्लाइड हबो डेब्रिस फ्लो हबो ओके देन ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट केदारनाथ रहितला कोन हितला केदारनाथ मंदिर केदारनाथ टेम्पल ओके तो कौन ला गोटे ग्लेशियल लेक माने कोन बरफ तरली की पानी अछि ता चारिपटे पत्थर अछि पानी गुडा आ भीतर अछि तो पानी एते ही गला जे आ बंध भी संभाल परलानी फाटिला बंध भांगिला जहा थिला पानी पळासला सब जगह से कोन गला पूरा एरिया धोई नहीं पड़ेला किंतु मंदिर बंची गला ठीक अछि जय भोलेनाथ ठीक अछि देन आउ कोन हे परिबो जियोमॉर्फिक हैजार्ड्स ओके अर्थक्वेक भी हे परिबो देन सिंपल सॉइल इरोजन भी हे परिबो so these are the geomorphic hazards अरे बुझिला geomorphic hazards ओके अच्छा लैंडस्लाइड्स कोड देखा जाउछ वेस्टर्न घाट्स एबे हमें देखले कोटी लास्ट ईयर अराउंड हेतला वेनाड रे केरला वेनाड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कोड देखा जाए हमें देखले केदारनाथ रे हेतला ओके एंड अर्थक्वेक हमें देखु सॉइल इरोजन मोस्ट कॉमनली हिली एरिया रे सॉइल इरोजन होची काहे ना फ्लो पळे आसी की बहुत फास्ट फ्लो आसी सॉइल इरोजन हे जाउछ ओके अच्छा वेस्टर्न घाट रे जो वेनाड जो हेतला लैंडस्लाइड अच्छा काहे हेतला बिकॉज़ ऑफ माइनिंग प्रोसेस माइनिंग हेले कोन होची लूज हे जाउछ जो सॉइल लेयर अछि सेटा लूज हे जाउछ तापरे लूज होला पर किछि हेवी रेनफॉल हेले ताको धोइ नै पड़ुछ ओके सो दीज आर अच्छा सॉइल इरोजन कोन कोस्टल इरोजन भी गोटे सॉइल इरोजन ने गोटे पार्ट आछो कोस्टल इरोजन
ओडिसा रे कोठी कोस्टल इरोजन होउची आर यू अवेयर ऑफ जानचो ओडिसा रे कोठी कोस्टल इरोजन होउची एनीबॉडी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ओडिसा रे कोस्टल इरोजन कोठी होउची ओके लिख परियो कि सात भाइया केन्द्रापड़ा रे सात भाई एरिया रे आउ तागर जो गाँ थिला से गाँ आउ नाही से गाँटा पळेलाणी समुद्र भितरु ठीक अछि कोस्टल रीजन भी हे परियो कोस्टल रीजन रे ओडिसा एग्जांपल हम दे परिबा ओके केन्द्रापड़ा सात भाई यस ओके तो तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जियोमॉर्फिक hazards लैंडस्लाइड वेस्टर्न घाट्स डेब्रिस फ्लो भी वेस्टर्न घाट रे परिबो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट केदारनाथ अर्थक्वेक कोठी हबो अर्थक्वेक प्रोन एरिया कोठी हिमालय इज अर्थक्वेक प्रोन एरिया नॉर्थ ईस्ट अर्थक्वेक जोन मैपिंग जो अछि हमरो ओके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रो अर्थक्वेक जोन मैपिंग अछि मोस्ट प्रोन फॉर अर्थक्वेक होछि हिमालय रीजन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ओके काहे कि ना हिमालय टा कोन यंग फोल्ड माउंटेन स्टिल इवॉल्विंग फेज रे अछि ओके अच्छा देन आउ गोटे जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी हम लिखि परबा एथरे लैंड सबसिडेंस नुआ जिंस लैंड सबसिडेंस कोड हेतला जोशीमठ उत्तराखंड रे हेतला लैंड सबसिडेंस दबी गला पूरा ठीक अछि लैंड पूरा दबी गला सो दीज आर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस नेक्स्ट क्वेश्चन पचारछि मिटिगेशन केमति करिया हाउ विल वी मिटिगेट माने कोन करिवा केमति प्रिवेंट करिवा ठीक अछि दीटा जिंस करि परिबा गोटे होछि आमे स्ट्रक्चरल मेजर नबा स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर कोन स्ट्रक्चरल मेजर माने होछि बंध तयारी करिवा किबा कंक्रीट पिलर दवा एटा होछि स्ट्रक्चर सब तयारी कर रखिबा नॉन स्ट्रक्चरल माने टेक्नोलॉजी यूज करिवा किबा वार्निंग सिस्टम लगेबा किसी पॉलिसी इनिशिएटिव नबा दीज आर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर हमें कौन करि परिबा सपोज पहाड़ अछि सेठी लैंडस्लाइड रो प्रोबेबिलिटी अछि हमें कौन कले बंध बांधिले बंध माने कोन बंध माने होछि रिटेनिंग वाल्स ता कुआ जाय हला रिटेनिंग वाल रखिले मतलब एटा रास्ता जाय जेमती ए लैंडस्लाइड गुडा आसी की रास्ता ऊपर न पड़िबो हम रिटेनिंग वाल रखिले जेमती कि लैंडस्लाइड होबनी एठू खसिबनी एठू न खसिले ऊपर भी खसिबनी ओके रिटेनिंग वाल फर्स्ट थिंग जस्ट अंडरस्टैंड माइंड रे थिले ही तम परीक्षा लिखि परिबो ना गुडा सुनिथिले ही परीक्षा लिखि परिबो रिटेनिंग वाल्स ओके सेकंड थिंग को करि परिबा ओके सपोज ड्रेनेज होची ड्रेनेज सिस्टम जो होची माने माउंटेन नु हाई फ्लो वाटर हाई वेलोसिटी वाटर ओके ताको हमें कंट्रोल करिवा ता माने आको हमें लिखि परिबा कि कंट्रोल्ड ड्रेनेज हमें करि परिबा ठीक अछि हमें सब देखिथिबो कंट्रोल ड्रेनेज माने कोन सपोज एटी गोटे रहिला माउंटेन रहिला स्टेप एटी गोटे स्टेप थिबो तातलो स्टेप थिबो तातलो स्टेप थिबो तातलो स्टेप थिबो वाटर टाइम आ ऊपर पडिबो आ ऊपर पडिबो आ ऊपर पडिबो तापर आसीबो जेमता वेलोसिटी कमी जिवो से बेसी हार्म करि परिबो नाही सॉइल को बेसी सॉइल इरोजन करि परिबो ठीक अछि एंड थर्ड हमें कोन करि पारे आउ कोन स्ट्रक्चर सबुठ भलो स्ट्रक्चर किए ट्री गच्छ लगेबा माने रिफॉरेस्टेशन सबुठ भलो स्ट्रक्चर होची ट्री रिफॉरेस्टेशन करिबा आउ कोन चेक डैम भी करि परिया चेक डैम भी तरी करिया चेक डैम माने कोन सपोज गली माने कोन एटा गोटे बड़ माउंटेन स्लोप टा गली माने एठी गोटे पानी रो स्रोत जाइथिबो एठी गोटे पानी रो स्रोत जाइथिबो एठी गोटे पानी रो स्रोत जाइथिबो एठी सीधा गोटे पळे आस्थिबो माने मु कहली छोट देखाउ छोट नै बहुत बड़ थिबो सेटा सेठी हम गोटे चेक डैम पकेदरे कोन हबो ए पानी गुडा तो हाई फ्लो पानी आसी चेक डैम रे रहिला ठीक अछि तो ता माने सेडिमेंट फ्लो जो होची सेडिमेंट फ्लो आ होबनी एठी गोटे पकेदवा चेक डैम एठी गोटे पकेदवा एठी गोटे पकेदवा एठी गोटे पकेदवा पकेदला सेडिमेंट गुडा का फ्लो बेसी होबनी ओके एंड चेक डैम रो ऑब्जेक्टिव कोन टू रिड्यूस द इरोसिव पावर ऑफ वाटर रो जो इरोजन पावर अछि ताको चेक डैम कमे दिए
ठीक अछि एटा सब स्ट्रक्चरल मेजर्स नॉन स्ट्रक्चरल मेजर हम कोन करि परिबा ओके नॉन स्ट्रक्चरल मेजर रे हम टेक्नोलॉजी यूज करबा ओके टेक्नोलॉजी यूज करा कोन पई फास्ट टेक्नोलॉजी होची वार्निंग सिस्टम अरे जानिले तो प्रिपेयर हवा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम है अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम है ओके अर्ली वार्निंग सिस्टम तार पर्टिकुलर ना होची अर्ली वार्निंग सिस्टम और ईडब्ल्यूएस अर्ली वार्निंग सिस्टम ओके अच्छा नेक्स्ट हम कोन करि परिबा लैंड यूज प्लानिंग लैंड यूज प्लानिंग माने कोन सपोज आमे कहले कि एटा मनकर गोटे बड़ एरिया अछि आमे देखले जे एई एरियाटा सबटु vulnerable एरिया जोटी कि लैंडस्लाइड होबार चांस अछि जोटी कि लैंड सब्सिडेंस होबार चांस अछि तो आमे सेठी कोन करि परिबा आमे से एरिया को लिखि परिबा दिस इज ए नो गो जोन ता माने एठी कि केही जाई परिबे नै किछि एक्टिविटी हे परिबन सेठी लैंड यूज प्लानिंग माने होची अकॉर्डिंग टू द vulnerability आमे लैंड को यूज करिबा गो जोन माने जोठी हमें काम करि परिबा नो गो जोन किछि करि परिबा सेठी ठीक अछि ओके देन लैंड यूज प्लानिंग नेक्स्ट होची थर्ड hazard zone मैपिंग hazard zone मैपिंग माने गोटे सिंपल मैप प्रिपेयर करिबा कि इंडिया रे एई जगह रे एई hazard गुडा प्रिवलेंट अछि सपोज हिमालयन रीजन में कोन hazards अछि नॉर्थ ईस्ट रे कोन कोन अछि गुजरात रे कोन कोन अछि वेस्ट बंगाल ओडिसा रे कोन कोन अछि वेस्टर्न घाट रे कोन कोन अछि तो दिस आर hazard zone मैपिंग सेटा करि परिबा देन कोन करि परिबा आ कोन लास्ट को लोक मान को आवर करवा भाई देख तमे जोटी रहूच सेठी एई डिजास्टर प्रिवलेंट अछि तेणु जगी की था कम्युनिटी अवेयरनेस ओके कम्युनिटी अवेयरनेस सो दीज आर मेजर्स टू मिटिगेट द geomorphic hazards okay I hope you got a clear picture of how we have to write the answers in the exam very simple from your own understanding and we cannot expect कि OPS रे पुणी ओडिशा स्पेसिफिक क्वेश्चन अधिका पकेओ आर वर्ष OPS is completely unpredictable even more than UPSC ओके तेणु सब प्रिपेयर ही जीवा पड़ियो ओडिशा स्पेसिफिक पढ़िया पड़ियो इंडिया स्पेसिफिक पढ़िया पड़ियो एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर यू कैन नॉट रिलाई कि 8 ट्रेंड ए वर्ष अछि आर वर्ष रहइबो कदा भी होबनी सेम हुए हो भी नहीं लास्ट 3 वर्ष भितरे ओके तेणु हमर टारगेट होछि सब पढ़ि जिवा बल से पढ़ि जिवा ठीक अछि so thank you for your kind attention for last 57 minutes that's a great achievement not only for you for me also okay so thank you very much all the very best keep reading